mutual funds. The mutual fund is an important financial intermediary that serves as the link between the investors and the security market. It pools the money from the individuals investors for the collective investment in a portfolio of a security to generate a significant return. Mutual funds are the set of the firms and trust under the Indian Trust Act 1882 in accordance with a SEBI and Mutual Fund Regulation 1996. In mutual fund, there is an exit load and entry load as well as an expense ratio also being maintained. The load can be defined as the difference between the prices charged from the investors at the time of buying and selling the mutual funds and actual NAV net asset value expenses ratio. The mutual funds are being permitted to the change to charge the operating expenses, which include the registration, transfer agent fee, audit and fee, custodian and fee, marketing and distribution of the fee. The marketing and the distribution fee supply from the mutual funds to the investors. Different type of the mutual fund कौन से होते हैं on a basis of the structure कि उस पर्सन को हम डिफाइन करते हैं, like Jeffrey ended funds, the unit of the open-ended mutual funds can be sold in a repurchase at any time and NAV net asset value. There is no fixed maturity ended over the fund. Then comes your close-ended fund. ये open-ended fund तब होता है close-ended fund. This type of the fund has a predefined maturity period. उसमें क्या होता है predefined maturity period होता है and investors can invest these schemes at the time launch. जब वो launch होता है तब उसमें ऊपर investor अपना जो स्कीम होता है वो उसमें दे सकते हैं and get out of the schemes and get out from the scheme at time होता है जब उसकी maturity हो जाए तब उसमें से अपना पैसे निकाल के लेके जा सकते हैं based on the asset classes. Debt fund क्या होता है? Debt fund are preferred by the investors who want a fixed returns, and a fund of this type and mutual funds are invested in the government securities bound in cooperative debenture. Then comes the equity fund. The funds are invested in equity shares and the investors get the return on the basis of the stock market. Then comes the hybrid fund and balance fund. The hybrid funds the fund consisting of the combination of the equity and the debt. Then comes the based on the investment goal, like growth fund. The main objective of the growth fund is to provide the capital appreciation to the investor. Then comes the income fund. Income fund provides the regular stable income to the investor. Then comes the money market fund. The prime objective of the fund is to maintain the invested principles and amount of provided by the liquidity and a certain income. Then comes your tax saving fund. Tax saving fund are the good for the investors who make the investment with the objective of a tax rate. जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है? जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होगा आपका आप जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होगा डोमेस्टिक फंड. दीज आर द फंड दैट पूल द मनी फ्रॉम द पर्टिकुलर कंट्री ओनली, उसको लोग बोलते हैं डोमेस्टिक फंड. ऑफ शेयर फंड क्या होता है? द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ऑफ शेयर फंड इज टू इंड्यूस द फॉरेन कैपिटल इन द कंट्री एंड इशूइंग द कंपनी द क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ द फंड रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल. अदर फंड में आपका आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. दीज fund are being blend. The mutual funds are listed individual stocks and they represent the index fund listed on a stock exchange and are traded in a stock exchange like individual stock. Index fund क्या होता है? The index fund is the mutual fund that allow the particular index like Bombay Stock Exchange and a National Stock Exchange Sensex. Tax implication and mutual fund. देखिए ग्राफ का जो हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है टैक्स इम्प्लीकेशंस जो आपके फंड्स के रहने वाले हैं या कि आपका टैक्स इम्प्लीकेशन और म्यूचुअल फंड. टैक्स इम्प्लीकेशन म्यूचुअल फंड्स ठीक है, इसके दो हिस्से बनते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड अदर ओरिएंटेड. इक्विटी में आपके दो हिस्से और टुकड़े बनते हैं, शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म गेन. शॉर्ट टर्म गेन क्या होता है? इफ़ द होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 12 मंथ एंड इफ द होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू 12 मंथ. ठीक है, टैक्स रेट होगा आपका 15%, टैक्स होगा 10% ओवर एंड अबव द 1 लाख गेन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टैक्स. इट कम्स योर अदर आपका फंड जो होता है आपका शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म गेन्स होता है. इफ द होल्डिंग पीरियड इज लेस देन द 36 मंथ उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स. एंड लॉन्ग टर्म गेन्स क्या होता है? मोर देन 36 पीरियड होता है उसका हम मोटे में बोलेंगे. हेयर योर यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 5 जो है 9 जो है आपका कम्स टू एन एंड. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.